A very good morning, all my dear students. I am Pallavi Dole. Welcomes you all in this today's lecture of programming with Python. We already started with unit number 4 and already completed the two topics, that is Python functions and modules. Now in this today's lecture we are dealing with see some of the inbuilt modules in the Python and also the packages. Okay, so now start with today's lecture, that is the math module. So these are the different inbuilt modules present in the Python programming language. Very first is the math module. A math module is used to access mathematical functions in the Python. All methods of these functions are used for integers or real type objects, not for the complex number. Okay, so math module is basically used to access the mathematical functions in the Python, and they are only performing their operations on the integer or the real type objects, so not on the complex number. So to use this module, we should import that module into our code, that is the import math. Okay, so here you need to import this statement into your own program if you want to use this number of different inbuilt modules which is basically you want to use in your program. तो अगर आपको आपके प्रोग्राम में ये जो डिफ़ाइन किए हुए जो भी फंक्शंस या मॉड्यूल्स है, अगर आपको उसको यूज़ करना है, तो यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल. Okay, so these constants are used to put them into your calculation. Okay, so see, this is the pi. So these are the all constants and its descriptions. Okay, so constants भी आपको use करने हैं according to their use. So pi, that returns the value of pi 3.141592. ओके, सो नॉर्मली मैन्युअली हम उसको 3.14 कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर जो उसकी वैल्यू जो कंसिडर की जाती है दैट इज़ द रियल वैल्यू, दैट इज़ 3.141592. okay, then e returns the value of a natural base e, that is e is equal to 0.718282. ओके, सो दिस इज़ दी ई बेस. ई जो भी आपका नेचुरल जो बेस होगा उसका, दैट इज उसका ई का, दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ 0.718282. then tau returns the value of a tau, that is tau equal to 6.283185. so see, these are all the constant here. यहाँ पर ये सभी के सभी जो है वो कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूज. जैसे कि हम एरिया ऑफ सर्कल अगर कैलकुलेट करते, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3.141592. तो यहाँ पर वो होल कंसिडर करेगा. सो दैट इज पाई इंटू आर विल बी द ऑपरेशन. तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है दैट इज पाई, विल इज नथिंग एट दिस 3.14, तो उसको कांस्टेंट बोला गया है, दैट इज पाई. तो आप यहाँ पे पाई ऐसा नहीं लिखोगे, पाई ऐसा लिखो, दैट इज द कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. देन ई इन एफ. ओके, इन एफ returns the infinity. Okay, then nan, that not a number type. Okay, so these are the different constant which is basically present in the math module. Now let us take the number and the numeric functions. Okay, so these are the basically the functions or modules present in the math module. Okay, so numbers and numeric representation. So these functions are used to represent numbers in a different form. The methods are like below. Okay, so यहाँ पर सबसे पहला है seal function. So seal in bracket x. So returns the sealing value. It is the smallest integer greater or equal to the number x. तो बेसिकली अगर सपोज अगर आपका नंबर है 3.6. ओके, सो 3.6 का जो सीलिंग वैल्यू होता है, मुझे मतलब ऊपर का जो वैल्यू होता है, दैट इज बिकम अ 4. सो स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द एक्स. तो ये आपका एक्स है,
तो x से ग्रेटर और इक्वल कौन है, दैट इज 3.6 से ऊपर कौन है, तो आपको 3.6, तो 6 के ऊपर तो 3.1 3.2 पॉइंट अगर वहाँ पे आया है तो उसकी ऊपर की जो वैल्यू है दैट वी हैव टू कंसिडर हियर। तो 3.6 की ऊपर की वैल्यू है 4, अगर यहाँ पे मैं 3.2 भी लेती दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 4, so that will gives the higher value, that is a greater or equal value of the number given x, तो this will becomes given the 4, तो that is the seal function। तो यहाँ पर जो seal function है आपका वेरी फर्स्ट, तो ये आपको रिटर्न करेगा सीलिंग वैल्यू, दैट इज़ दी अपर वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने सपोज x इक्वल टू 3.6 अगर लिया है, सो सील in bracket x, so it will return the number that is 4. Okay, so in this way this seal function will work. Likewise the second one, copy sign, that is x comma y, so it returns the number x and copy the sign of y to x. ओके, सो जो भी y की जो भी साइन रहेगी दैट इज अ साइन विल बी असाइन टू द x. Okay, so it will return the number x and copy the sign of the y to x. तो x तो x ही रहेगा, लेकिन y का जो साइन होगा that will be assigned to the x1 and that will be written with the help of the copy sign in bracket x comma y function. Okay, then fabs in bracket x, so it returns the absolute value of x. Okay, so absolute का मीनिंग होता है मॉड्यूलस. ओके, सपोज दिस इज x और x की वैल्यू आप सपोज है आपकी -1.4. सो एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ निगेटिव वैल्यू, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू टू यू. ओके, सो इट विल रिटर्न 1.4 टू u. So that is the FABS, means absolute value will be given by the FABS function, that is whether it is a positive or a negative. यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिख रही है उसका जो पॉजिटिव ही वर्जन होगा that will be given by the FABS function, written by the FABS function. Next is the factorial in bracket x. So it returns the factorial of x where x is greater than or equal to 0. Okay, so the must condition is अगर आपने 0 अगर वहाँ पे पास किया तो 0 का कुछ भी factorial नहीं था. 0 multiplied with anything that will be returns of 0. Okay, so that's why always pass a value greater than the 0. Okay, so here factorial x, तो suppose अगर मेरा x मैंने यहाँ पर 3 लिया है. Okay, and the call the function factorial in bracket x. So x का factorial means that is 3 factorial. So it means 3 into 2 into 1. So 3 into 2 that is 6. 6 into 1 that is 6. Okay, so it will return the value 6. So it will return 6 here. Okay, so this is the purpose of the normal जो हम factorial calculation जो perform करते हैं, that will be given by the directly the factorial function which is inbuilt function in a math module. Okay, next is the floor x. So returns the value, floor value. It is the largest integer less or equal to the number x. Okay, so जो हमने seal देखा that will give us the ग्रेटर और दी इक्वल वैल्यू, बट यहाँ पर फ्लोर जो है, तो फ्लोर का मीनिंग होता है नीचे की वैल्यू. तो हमने जो 3.6 यहाँ पे देखा था, सपोज हियर x बिकम्स 3.6 हियर. ओके, और 3.6 का अगर आपको फ्लोर निकालना है सो दैट विल गिव्स द 3 हियर. ओके, मीन्स 3.6 एनीथिंग विल बी देयर, तो वहाँ पे नीचे कौन है, दैट इज़ 3. ओके, सो दैट विल बी गिवन बाय द, यहाँ पे जो है वो 3 ही मिलेगा. सो हियर वेन एवर यू आर कॉलिंग द फ्लोर फंक्शन इन ब्रैकेट x, सो दिस विल रिटर्न्स 3 हियर. ओके, वेदर इट इज़ 3.1 तो भी आपको 3 ही देगा. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2.9 सो इट विल गिव्स द 2. ओके, क्योंकि 2.9 की नीचे की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2. ओके, सो दैट विल बी गिवन बाय द, मीन्स फ्रैक्शन जो है पार्ट वो निकाल के आपका जो एक्चुअल जो इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है दैट विल बी अबो और बिलो, दैट विल बी गिवन बाय द सील एंड दी floor function in this case. Okay, so this will be the floor function which is exactly working in this Python programming language. Next is the fsum in bracket iterable. So find the sum of the elements in an iterable object.
whatever the values will be assigned in an iterable, that will all be sum up together and उसके जो elements है उसकी sum find करेगा और आपको return करेगा. Okay, so f sum will provide दी जो भी इटरेबल, मतलब इटरेबल मीन्स आप जो भी लिस्ट या सो कोई भी एक टाइप का जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पे देने वाले हो, दैट विल सम अप टुगेदर, उसकी सम फाइंड करेगा हर एक एलिमेंट की, एंड दैट विल बी रिटर्न इन केस ऑफ द एफ सम फंक्शन. नेक्स्ट इज द GCD-XY, that is the this one. So returns the greatest common divisor of the x and y. This is the mathematical calculations. You know the greatest common divisor जो होता है, how it will be find. So this will be directly written with the help of the GCD function, which is basically present in the math module. Next is the infinite in bracket x is finite. So check whether the x is a neither an infinite nor none. Okay, so this will gives the number. Then is infinite. Okay, so first is finite and second one is the is infinite. So check whether x is a infinity. Okay, so these are all the basic functions which is present in the math module, basically used in the Python programming language. Okay, so next this is the example related to math module. So here see very first is the math, import math. So यहाँ पर हमने सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिया है दैट इज़ दी इम्पोर्ट मैथ. तो आपको सबसे पहले मैथ को इम्पोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. देन प्रिंट द फ्लोर एंड द सीलिंग वैल्यू ऑफ 23.56 आर. सो strmath.ceil 23.56. ओके, सो यहाँ पर आपको जो मैथ डॉट है जो दैट इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल, सो मैथ को यहाँ पे आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो मैथ डॉट सील, उसका जो आउटपुट है सी या 24, सील का जो है दैट विल बी 24 और जो फ्लोर का है वो दैट इज़ 23. तो बड़ी और नीचे की वैल्यू आपको यहाँ पे दी. देन असाइन x इक्वल टू 10, y इक्वल टू -15. सो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x आफ्टर कॉपिंग द साइन फ्रॉम y इज़. ओके, तो यहाँ पे देखिए जो y की जो वैल्यू है दैट विल बी -10. ओके, सो वो जो x को असाइन की, x को अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया है सो दैट विल प्रिंट -10.0. तो जो y की साइन थी माइनस दैट विल बी असाइन टू द x. ओके, एंड दैट विल गिव अस द नेगेटिव वैल्यू. Next is the print absolute value of a -96 and a 56 are. So absolute values of -96 तो 96 देगा आपको और 56 की 56 ही दी. So means negative will be converted into a positive and the positive becomes a positive. See here. और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको ये शो हो रहा है. So that is important again here. Okay. Next is the my list. Okay. So here I am again. My list 12, 4.25, 89, 3.02 minus, then these are the different values. So here the math dot f sum my list. So it will add all the numbers from this list. यहाँ पे जितने भी आपको numbers दिख रहे हैं that will element will be sum up together and that will print the message on the console, that is 42.13 90 90 99. Okay, so this will gives the value, that is this function will gives the sum of the all number. Next is the print the GCD of a 24 and a 56. So this will print the 8. Okay, so GCD 24 comma 56, so इसका जो आंसर है that will be 8 here. Next is the float nan, x equal to float nan. If math dot is nan x, so whether it is a true or false, so that like it is a not a number. Okay, so nan means उसका number not a number था, तो उसने print किया it is not a number. Okay, and next one is the float infinite. तो वहाँ पे उसको infinite दिया, so is it a it is a infinity. ओके, तो यहाँ पे हमको आंसर मिला इफ़ मैथ डॉट इज़ इनफाइनाइट, तो उसने आंसर दिया इट इज़ अ इनफाइनाइट. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको असाइन करके रखा है. देन द लास्ट वन इज़ द ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स प्रिंट मैथ डॉट इज़ इनफाइनाइट एक्स एंड मैथ डॉट इज़ इनफाइनाइट.
Okay, so that will first one becomes false and second one becomes true here. Okay, so this is all about the math module basically present in the Python programming language. Next is the power and the logarithmic function. This is also important one present in the Python programming language, power and logarithmic function. These functions are used to calculate different power related and logarithmic related tasks. So very first is the pow in bracket x comma y returns the x to the power of y value. Okay, so यहाँ पर x की power है y, so this will be given by this pow. Okay, next is the sqrtx, so find the square root of the x. So if I am passing the 4 under square root, so it will give the 2, क्योंकि 2 का square क्या होता है 4, so square root of a 4 is equal to 2, so that will be given by the sqrt function. Next is the exp in bracket exponential form. So find xe where e equal to 2.718281. Okay, so यहाँ पर e की जो वैल्यू है that will be constant here. तो in this case e जो है that will be constant, so that will be multiplied with the x. So it will give the exponential of the form of the given number. Next is the log in bracket x base. Okay, so returns the log of x where base is given. Okay, so default base is e here. तो ये आपका भी मैथमेटिकल फंक्शंस है, तो दैट विल बी अ लॉगरिथमिक. सो लॉग ऑफ एक्स विथ द बेस, जो आप बेस वहाँ पे दोगे दैट विल बी गिवन बाय द वैल्यू, और जो डिफ़ॉल्ट होता है दैट विल बी ई. सो विद द हेल्प ऑफ, अगर आपने नहीं दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफ़ॉल्ट, तो ई कंसिडर करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका पूरा का पूरा ऐसा होगा. ओके, विथ ई. अगर आपने यहाँ पे बेस 10 दिया, सो लॉग बेस 10 ऑफ एक्स दैट विल बी गिवन बाय द function. Okay, so that is the log. Then log 2 in bracket base, so यहाँ पर returns the log of x where base is 2. so यहाँ पे mention किया है base 2 and here the log 10 is given. Okay, so log 2 और log 10 they are constant. यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पास करनी है. अगर आपको पर्टिकुलरली कोई भी बेस अगर वहाँ पे देना है, so that will be given in this function. Okay, so this is all about the power and the logarithmic function basically present in the Python programming language. Next is the program or example code which is based on this power and power code. Okay, so import first statement, that is math, then print the value of x 5 power of 8. So here pow function will be used here. So 5 raised to the power 8 ये आपका ये consider करेगा, that will be given the answer 390625. Next is the sqrt function. So sqrt of 400, that will be a 20. So this will be given a square root of 400 is nothing but a 20. So that will be given by the sqrt function. Next is the math.exp5. ओके, सो exp5 एक्सपोनेंशियल 5. तो यहाँ पे हमने देखा था कि x और e के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, तो जो भी e की वैल्यू हमने कांस्टेंट देखी, e की वैल्यू जो कांस्टेंट थी दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद दी दिस वन. ओके, सो दैट इज़ दी एक्सपोनेंशियल. नेक्स्ट इज़ दी math.log 625 base 5. So that will be return the value 4 here. ओके, यहाँ पे हमने बेस को मेंशन किया है. ओके, सो जो हमने ये वाला जो पार्ट पढ़ा था, ये वाला जो फंक्शन था हमारा, सो दिस वन यहाँ पर हम बेस को मेंशन कर सकते हैं. सो दैट विल बी गिव्स द आउटपुट इन दिस प्रोग्राम, दैट इज़ 4. नेक्स्ट इज़ दी math.log2. तो यहाँ पे log2 मेंशन है, दैट विल बी एक्स वैल्यू 1024. सो दैट विल गिव्स द आंसर 10 हियर, एंड log 10 in bracket same value, so it will gives the answer 3.01029 up to the number of digits. Okay, so according to the change in a base, your output is also changed. If it is log 2 base, then the 10 will be answer, and if it is log 10 base 10, so it will be gives the answer 3.001. Okay, so this is all about the powers and logarithmic function basically included in the math module. Okay, so you first import that math module in your program and then use the different types of math function in your program.
Next is the trigonometric and the angular conversion functions. Okay, so trigonometric and angular conversion function. So sin x will return the sine of a x in a radians. Cos x returns the cosine of a x in a radians. Tan x returns the tangent of a x in a radian. A sin x, this is the inverse operation of the sine. There are a cos, a tan, and also. Okay, so degrees of x, to convert angle x from radian to degrees, and radian in bracket x, to convert angle x from degree to radian. So this is all about the trigonometric and angular conversion functions. So according to that, this program will again executed in the Python programming language. So see here, import math, print the value of a sine 60 degree. Okay, so str in bracket math dot sine math dot radians 60. Okay, तो जो भी रेडियन है that will give given the degree to the radian. Okay, so यहाँ पर इसका जो output है that becomes 0.86602. Okay, I don't know the conversions, but according to the program it will gives the correct output on your programming command prompt. So okay, so use that all the different functions on your practice and see the output will be displayed on the command prompt. Next is the value of a cos, that is pi. So math dot pi, pi की वैल्यू यहाँ पर -1.0 आई है. Then tan 90 degrees, so math dot tan math dot pi divided by 2. Okay, so here again it will gives the value 1.63312 e raised to the power 16. So exponential form में ये दिया है आपको वैल्यू. Then degree math dot assign, so this will give the output 59.90909099. So in this way your programs will works. Okay, so according to the depending upon the programmer, तो आपको इस पे भी बेस्ड नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्रोग्राम्स आ सकते हैं. आपका आउटपुट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हर फंक्शन का क्या यूज़ है इट मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन एज एन MCQ पैटर्न. ओके, सो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है अच्छे से, ये जो कंसेप्ट है ये उसको ध्यान में लेना है, जो भी आपके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स है. ओके, सो दिज आर द सम कांस्टेंट दैट इज़ पाई, ई, टा, इन्फिनिटी, नाम. ओके, सो नॉट अ नंबर टाइप, सो ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिज आर द डिफरेंट नंबर एंड न्यूमेरिक फंक्शन, दैट इज सील, कॉपी साइन, एफ ABS, factorial, floor, f sum, GCD, infinite, and is infinite. Okay, next is the POW, SQRT, exponential, log base और log 10. तो यहाँ पर ये जो certain जो है that will be given with the certain बेस. तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली कोई भी बेस यूज़ करके आपका लॉग आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, next is this is the example based on this, and these are the triangular and the angular conversions basically present in the Python programming language, that is sine, cos, tan, assign, degrees, and radians. Okay, so according to the users you can implement these different functions, inbuilt function in your program. So a very basic condition is there. First import the math module इन योर प्रोग्राम. तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए, मैथ मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है एंड देन विद द हेल्प ऑफ द मैथ कीवर्ड. ओके, जैसे कि स्टैटिक अगर कोई रहता है तो मैथ कीवर्ड यूज़ करके डॉट आपको फिर साइन जो भी आपकी वैल्यूज़ है वो पास करनी है. सो हियर द मैथ कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैथ डॉट आपको यूज़ करके एक्सेस करना है विद डिफरेंट फंक्शंस विच इज़ बेसिकली इनबिल्ट फंक्शंस प्रेजेंट इन द मैथ मॉड्यूल. ओके, so in the next lecture we are going to study the concept of Python packages. Okay, so this is a last topic which is basically present in the Python 4th unit. Okay, then onwards we will start our 5th unit. So till then, thank you so much all of you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.